Good morning. I'm Dr. Amit Nigam, lecturer in the Department of Consultative Dentistry, Babu Dansida College of Dental Sciences. The topic for today's lecture is pulpal diseases. So, as we all know, the tooth comprises of three layers: the outermost enamel, the middle one dental, and the innermost is pulp. So, what is the outcome of a treatment is very much dependent on the diagnosis. The diagnosis means the identifying the diseases, and identifying diseases is based on the symptoms of the patient, right? So, for a good outcome of the treatment, the we should know how to identify the disease. So, coming to the dental pulp. Introduction. The dental pulp is a part in the center of the tooth made up of living connective tissue and the cells called odontoblasts. These odontoblasts you would have also read in second year, right? And the pulp contains the blood vessels, the nerves, and connective tissue inside the tooth and provides the tooth blood and nutrients. है ना? हम लोग सब जानते हैं सेकेंड ईयर में तुमने पढ़ा होगा कि पल्प के क्या काम होता है tooth को नर्व सप्लाई देता है और ब्लड सप्लाई देता है. In turn, it provides nutrients, है ना? And the pulpitis is the inflammation of dental pulp tissue. Itis जहाँ पे भी लग जाता है, it refers inflammation, right? So pulpitis क्या हो गया? It is the inflammation of pulp, right? So coming to the causes of the pulp disease. The causes of pulp disease could be classified into physical, then thermal, then electrical, right? So physical causes. In the physical causes, we first have mechanical cause. Mechanical में क्या क्या हो जाएगा? Trauma. Trauma जैसे चोट लगना ना. चोट कैसे लगती है? एक्सीडेंट से. तो trauma से first is accidental. Then you can write down iatrogenic dental. Iatrogenic means surgeon induced, तो doctor induced है ना. तो जो हम लोग पेशेंट को करते हैं, that those are iatrogenic infection. तो इसमें we have iatrogenic dental procedures. Then the second one is pathological wear. Pathological wear, it could be a wasting disease as attrition, abrasion, or erosion. Then we have crack through the body of the tooth and barometric change. Barometric change refers to the pressure changes, right? Pressure, like in the plane, right? Then first one physical, the second is thermal. Thermal we have the heat during the cavity preparation. जब हम लोग cavity बनाते हैं तो जो हम लोग heat generate होती है, जितने revolution से heat भी generate होती है, उसकी वजह से हो सकती है. Then we have exothermic heat during the setting of cement. जब कुछ cement set होता है तो वो heat release करता है. Exothermic means heat release करना है ना, तो वो heat release करता है. Then we have the conduction of heat and cold through the bases, right? Then we have frictional heat during the polishing of. जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में पॉलिश करते हैं तब भी हीट फ्रिक्शन से निकलती है, उसकी वजह से भी हो सकती है डिजीज, है ना. इन टर्न मतलब नटशेल में क्या है कि जो भी चीज कोई भी चीज मतलब हीट प्रोड्यूस कर रही है ये ट्रॉमा, उससे हमें पल्प को नुकसान हो सकता है, ठीक है. देन वी हैव इलेक्ट्रिकल कॉज. इलेक्ट्रिकल कॉज इज व्हाट? गैल्वेनिक शॉक. गैल्वेनिक शॉक क्या होता है? इट इज व्हाट द फिनोमेना ऑफ गैल्वेनिज्म यू रेड इन फर्स्ट ईयर, नो, लाइक द प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर मेटल्स ना. So there is generation of current. These currents are known as galvanic currents, है ना. Dissimilar metals की वजह से जो होता है, opposing जैसे कोई restoration gold के अगेंस्ट amalgam restoration है तो उसमें galvanic currents आ जाते हैं ना. These currents are known as galvanic currents, right? And what they give us a galvanic shock. This is also one of the causes for the pulpal diseases. Then we have chemicals. Chemicals में कौन कौन से हो जाएंगे? We have phosphoric acid, acrylic monomer, and the second one is erosion. Erosion is again a wasting disease which has a chemical in origin, right? So we have phosphoric acid and erosion. Then we have bacterial. So bacteria में क्या हो जाएंगे? First, toxins associated with caries. Then direct invasion of the pulp from caries or trauma, and ankylosis. Ankylosis is the transportation of the microbes to the site of the inflammation through blood or lymph, right? So coming to the classification, how we can classify these? Grossman classified the diseases of the pulp on the clinical features. The first one was pulpitis or inflammation. In this we have reversible. Reversible we have symptomatic and asymptomatic. Symptomatic कैसा है? जैसे कि कोरोना के आजकल जिनको की किसी चीज के लक्षण सिम्टम आते हैं, और एसिम्टोमेटिक जिनको कोई सिम्टम नहीं होते, तो यूजुअली एसिम्टोमेटिक पेशेंट जो क्रॉनिक होते हैं, तो सिम्टोमेटिक कुड बी एक्यूट and asymptomatic could be chronic. Then we have irreversible. Irreversible, we have first one is acute,
देन वी हैव एबनॉर्मली रिस्पॉन्सिबल टू कोल्ड, है ना। तो जब जैसी जरा सा भी ठंडा पानी पिएगा एकदम से बहुत तेज दर्द है, उसको सेंसिटिविटी होगी पेशेंट को, तो दैट इज एबनॉर्मली रिस्पॉन्सिबल टू कोल्ड। एंड द सेकंड वन इज एक्यूट इज एबनॉर्मली रिस्पॉन्सिबल टू हीट, है ना। जैसे कोई थोड़ा सा भी चाय पी गर्म को एकदम से बहुत ज्यादा पेन इवोक होगा या उसको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, दिस इज एबनॉर्मली रिस्पॉन्सिबल टू हीट। Then we have chronic. Chronic we have asymptomatic with pulp exposure. Then we have hyperplastic pulpitis and internal resorption. Internal resorption is also known as pink tooth of Mammary. You could have read in second year, no? Then we have pulp degeneration. Pulp degeneration we have calcific and others also. Then necrosis. Factors affecting response of the pulp. फर्स्ट वन इज सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन, कितने दिनों से है, ठीक है, और कितना सीवियर है ना, ठीक है। देन नेचर ऑफ द रिटेंट, किस टाइप का है ना, जैसे अभी हम लोग ने बहुत सारी चीजें देखी ना, उसमें से कौन सा रिटेंट है। देन हेल्थ कंडीशन ऑफ पल्प और प्री एल्सर स्टेट ऑफ द पल्प, है ना, पहले पल्प किस हालत में रही है ये भी देखना पड़ता है। अपाइकल ब्लड फ्लो, लोकल एनाटॉमी ऑफ द पल्प चैम्बर एंड होस्ट की डिफेंस कैसे, इम्यूनिटी, है ना, जैसे आजकल हम देखे ना इम्यूनिटी, दैट इज ऑल नथिंग बट होस्ट डिफेंस, है ना। Now the pathways of bacterial invasion. So pulp could be invaded in various methods, है ना, various ways. First one is the opening into the dental hard tissue wall, है ना, how, through caries, through clinical procedures, through trauma induced by the fractures and microcracks. Then we have bacteria from gingival. Gingival का कौन सा होता है, जो tooth, this gingival provides, it's a space between the gingiva and the tooth, that is gingival sulcus, okay, and also known as pocket, है ना। पॉकेट, हालांकि जिंजाइवल सर्कस इज नॉर्मल टर्म, पॉकेट इज अ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग, है ना। देन वी हैव एंडोडोंटिक रीइंफेक्शन, किसी भी दांत की आरसीटी हुई है लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए सही हो गया वो, इट कुड बी रीइंफेक्टेड एंड दैट इज आल्सो सर्व फॉर द पाथवे फॉर द बैक्टीरिया। देन वी हैव एक्सटेंशन ऑफ पेरियापाइकल इन्फेक्शन फ्रॉम द एडजेसेंट, कोई दांत अगर अगर मेरा एक दांत आज सही है, बगल वाला दांत इन्वॉल्व है, तो क्या होता है कि जो बगल वाला दांत होता है वो अपने एडजेसेंट को इन्वॉल्व कर लेता है ना। Then we have anaclerosis. So anaclerosis or microbes through the blood or lymph to the area of inflammation, such as with pulpitis. Okay. Then aerodontology. So aerodontology refers to take occurring at low atmospheric pressure कब होगा, जैसे कि हम लोग when we go on a flight, है ना, तो क्या होता है, as we go up the atmospheric pressure reduces, so anybody can have this aerodontology, that is the toothache occurring at the low atmospheric pressure experience either during flight or during a test run in a decompression chamber, है ना, जहां भी हम लोग का atmospheric pressure कम हो जाता है, there we encounter this type of pain which is known as aerodontologia. Then it is usually observed at a high altitude over 5,000 feet. Then tooth with chronic pulpitis can be symptomless at ground level, but it may cause pain high altitude because of reduced pressure, है ना। कई क्या होता है कि जैसे वो बहुत पुराना दांत को इसमें कीड़ा लगा हुआ है, तो यूजुअली उसको क्या होगा, जब वो यहाँ पर है, जब वो धरती पर है या वो जमीन पर है, तो उसको यूजुअली सिम्टम नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है, once he goes up on the flight at a certain height, what refers to 5,000 feet, है ना, he often encounters this pain, है ना, जो कि high altitude पे होता है ना। So this type of pain is also known as aerodontalgia. Then we have reversible pulpitis. The pulpitis is also known as pulpal hyper. Hyperemia is the increased blood supply to any organ, right? So reversible pulpitis is a transient increase in supply of the pulp, right? So it could be a mild to moderate inflammatory condition of the pulp caused by a noxious stimuli in which pulp is capable of returning to the normal state, है ना, और अनइन्फ्लेमेड स्टेट। क्या होता है कि जैसे एकदम से क्या हुआ, एकदम से कोई भी चीज हुई तो एकदम रिस्पॉन्स क्या हुआ, पल्प की एकदम से वहां की एकदम से ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, ब्लड सप्लाई तो पल्प में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, लेकिन क्या होता है, इसकी खासियत ये कि इट सबसाइड्स आफ्टर द स्टिमुलाई इज रिमूव्ड, that it means that it is reversible. The pulp is capable of returning to the uninflamed state after the removal of the stimuli. So etiology is trauma, thermal shock, excessive dehydration of the cavity, galvanism, and bacteria from caries. Now clinical features. Clinical features, तो it is sensitive to thermal changes, especially cold, है ना। इसमें क्या होता है कि दूध बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठंडा ज्यादातर ठंडे से, ठीक है। तो पेन का क्या होता है, पेन का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है ना, ये एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड फीचर होता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल टाइप में। इसमें क्या होता है, पेन शॉर्ट ड्यूरेशन को होता है एंड
क्या होता है खासियत इसकी, disappears on withdrawal of the thermal effect. जब भी आप ठंडा गर्म हटाएंगे एकदम से, it lasts for few seconds, and that's one of the more differentiating features between the acute reversible and irreversible pattern. इसमें क्या होता है, पेन बहुत ही कम समय का होता है ना, और जैसे ही हम रिमूवल इरिटेंट रिमूव करते हैं पेन खत्म हो जाता है ना. The affected to respond to the inflammation of electric pulse tester at lower level of current indicating low pain, है ना, पेन थ्रेशोल्ड हो जाता है तो इलेक्ट्रिक जो पल्स टेस्टिंग होती है उससे क्या, तो बहुत ही लो उस पे हम लोग को रिस्पांस मिलती है. It usually show deep carries, metallic rotation with defective margins. तो डायग्नोसिस आई टोल्ड यू इट्स बेस्ड ऑन सिम्टम्स, है ना, क्या होगा कि एकदम से जैसे आपने हटाया एकदम से सब पेन खत्म हो जाता है, तो स्टिमुलस जैसे ही हटता है पेन, तो दिस इज बेस्ड ऑन सिम्टम्स. देन क्लिनिकल टेस्ट में कौन सा, कोल्ड टेस्ट है, कोई कोल्ड से ज्यादा वो, इसलिए कोल्ड टेस्ट इज मोर रिलायबल इन दिस रिवर्सिबल पल्साइटिस. नाउ द ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज, है ना, सबसे पहले तो यही है कि डेंटल कैरीज प्रिवेंट करोगे. देन वी हैव अर्ली इंसर्शन ऑफ फिलिंग्स, desensitization of neck of the tooth with gingival access, है ना, cavity varnish or base application before insertion of filling, care in cavity preparation and polishing. जितने भी causes थे ना हमारे, सब जितने भी causes थे उनको अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो ये हमारा प्रिवेंटिव पार्ट हो जाएगा ना. कैविटी प्रिपरेशन में अगर हीट से होता है तो हमको केयर कर रखेंगे तो हो सकता है कि हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन ना हो, हाइड्रोजेनिक, है ना. एंड इफ प्राइमरी कॉज इज नॉट करेक्टेड एक्सटेंसिव पल्पाइटिस में रिजल्ट इन डेथ ऑफ द पल्प. अगर इस स्टेज में हम लोग कुछ ठीक नहीं करते हैं तो पल्प आगे और डैमेज होती जाएगी, इससे क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगी पल्प. Then we have acute pulpitis. Acute pulpitis is what? It's extensive acute inflammation of dental pulp. Is a frequent immediate sequelae of focal reversible pulpitis, although it may occur as an acute exacerbation of chronic inflammatory process. The etiology is bacterial invasion through the dental caries, most common. Then we have chemical, thermal, or mechanical causes. Same causes, right? Because these are the causes for the pulpal disease only. Then we have reversible pulpitis may deteriorate into irreversible. जो भी irreversible अगर untreated है, that can result in irreversible pulpitis. अगर उसको समय से हम लोग ने intervene नहीं करा तो. Then clinical features. Early stages involves only a portion of pulp, usually the area just beneath the caries ridge, है ना. जब शुरुआती उसमें क्या होता है, जहाँ पे पल्प, जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है कि जस्ट जो एरिया होता है उसके नीचे उसी वहीं तक रहता है ये लिमिटेड. Then teeth extremely sensitive to hot or cold stimuli and cause increase in pain intensity and persist even after the thermal. इसका सबसे यही डिस्टिंक्शन हम बता रहे थे कि इसका जो पेन होता है जब हम स्टिमुलस रिमूव करें तब भी it persists, है ना, persists not for hours but even if persists for more than few seconds it goes in the favor of irreversible pulpitis. Then pain is poorly localized, है ना, आप ये नहीं बता सकते मेरे इसी दांत में, तो लोकलाइज नहीं होता है. it could be distributed. So poorly localized pain since pulp of the individual is not represented in the sensory cortex. ठीक है. Interpulpal abscess formation causes severe pain, lancinating or throbbing. Intensity of the pain can increase when patient like जैसे patient लेटता है ना तो एकदम से उसका क्योंकि सारा पल्पल फ्लो उस तरफ चला जाता है, इंटेंसिटी ऑफ पेन लेटने में बढ़ जाता है. So pulse vitality test indicate increased sensitivity of low current. Pulpal pain is due to the pressure built up due to lack of, है ना, क्योंकि जो प्रेशर बिल्डअप उसको निकलने की जगह नहीं होती है तो इसलिए पल्पलिंग ज्यादा होता है ना. पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस फ्रॉम इन्फ्लेमेशन. Then pain subside when drainage is established or when pulp undergoes complete necrosis, है ना. या तो पेशेंट या तो पल्प पूरी डेड हो जाएगी तब पेशेंट का पेन सबसाइड होगा ना, क्योंकि पल्प ही सारी चीज की जड़ है ना. तो अगर पेशेंट या तो पल्प डैमेज हो जाएगी पूरी तब या तो पेन कम हो जाए या हम उसको पस निकलने का रास्ता बना दें, जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर तो ड्रेनेज स्टेब्लिश हो जाएगा तो पेन अपने आप खत्म हो जाएगा. The tooth is not tender to percussion unless the pulpal inflammation is spread beyond the root attack into the जैसे ही पेरियापाइकल रीजन में जाता है दांत टेंडर हो जाता है, अदरवाइज दांत टेंडर नहीं होता है. So this is a chart representing all this. Rise in the pulpal pressure along with the inflammatory exudate, then the local collapse of various venous part of the circulation, then local tissue hypoxia. Hypoxia is a decreased oxygen supply to a particular organ or tissue, or anoxia, then finally leading to the pulp abscess. The diagnosis, every part is first thing is inspection, very important part. Inspection discloses a deep cavity and a pulp exposure. Radiograph we can find exposure of the pulp and or either we can find the caries under a filling, है ना. Then we have thermal test में कौन से heat test भी होता है, cold test भी होता है हम लोग का.
Then treatment is dependent drainage of the exudate from the chamber, like in the root canal treatment as the first stage, and then pulpotomy and placing calcium hydroxide over the entrance of the root canal. Then we have root canal treatment. Then we have, if it's not successful, then finally the tooth has to go for extraction. So the final, if the root canal treatment is not possible or it is not successful, the tooth has to go for extraction या दांत को हमको निकलवाना पड़ेगा. तो chronic pulpitis. Chronic pulpitis is chronic कौन सी chronic जिसकी duration बहुत ज़्यादा हो जाती है, that is chronic, right? Acute is sudden in onset. So this is chronic pulpitis. Acute, now this is chronic. So chronic pulpitis is a persistent inflammatory reaction in the pulp. So the chronic pulpitis is the persistent inflammatory reaction in the pulp with little or non-constitutional symptoms, जिसमें कि symptom बहुत ही dull या होते ही chronic चीजों में ज्यादातर ऐसे ही होता है. Clinical features as mentioned, pain is not prominent, mild, dull ache which is intermittent, ना रुक रुक के होता है, continuous नहीं होगा, acute नहीं होगा, ठीक है. Reaction to thermal changes reduced because of degeneration of nerve, है ना, क्योंकि nerve degenerate है इसलिए thermal changes से जो hot and cold के भी हम लोग को बहुत जल्दी response नहीं मिलती है. रिस्पॉन्स टू पल्प फाइब्रिलिटी से रिड्यूस, है ना, बिकॉज क्या हो गया, कोई पल्प बहुत दिनों से हम लोग इन्फेक्ट हो रही है इसलिए. द वाइड ओपन कैरियर लीजन एंड विद एक्सपोजर पल्प कॉज रिलेटिवली लिटिल पेन. मैनिपुलेशन विद स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफन एलिसिट ब्लीडिंग बट विद लिटिल पेन. Treatment again same, root canal therapy, or if not possible or it is a failure, then the tooth has to go for extraction. Then coming to the chronic hyperpulpitis. This is also known as pulp polyp. This is the overgrowth of pulp tissue outside the boundary of pulp chamber as protruding mass, characterized by development of granulation tissue covered at times with epithelium and resulting from long-standing low-grade infection. The more important point here is that it's a very low-grade infection resulting in chronic hyperplastic pulpitis or pulp polyp. Etiology is slow progressive carious exposure of the pulp, a large open cavity, a young resistant pulp and a chronic low grade stimulus, है ना. Young pulp में क्यों होगा, क्योंकि उनकी immunity ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए ना. The clinical features, children and young adults with high degree of tissue and reactivity and respond to proliferative regions. Teeth with large open caries lesions, pulp, pinkish red globule of tissue protruding from chamber and extend beyond the caries. Most commonly affected are deciduous molars and the first permanent molars. The pulp is relatively insensitive. Lesion bleeds profusely upon provocation. Due to excellent blood supply, tissue resistance and reactivity in young person leads to unusual proliferative property of the pulp. This is what I was mentioning. Some cases, gingival tissue adjacent may proliferate into a caries lesion and superficially resemble hyperplastic pulpitis. So, careful examination is made to determine whether connection is with the pulp or gingiva. So diagnosis is first is clinical examination. Seen in children and young adults, a freshly reddish pulpal mass fills most of the pulp chamber or cavity or even extends beyond the confices of the tooth. So radiography, we will see large open cavity with direct access to the pulp. See, you can see here in the radiograph. This is a large open cavity where we got a direct access to the pulp chamber. This is the gangrenous necrosis of the pulp. So this, what is the sequelae is untreated pulp results in complete necrosis of the pulp. As this is associated with bacterial infection, so this is also known as pulp gangrene. It is associated with foul odor when pulp is open for endodontic. जैसे हम एकदम से चैम्बर खोलते हैं, हमें एकदम से बहुत ही गंदी स्मेल आती है ना. That is, then in sickle anemia, blockage of pulp vessel seen. Dry gangrene pulp dies for unexplained reason. कोई इसका reason को explain नहीं है अभी तक. This may be due to trauma. जो possible cause है, could be due to trauma or in fact is what? In fact क्या होता है? Necrose जो tissue होता है ना, वो जब dead हो जाता है, that is in fact, ठीक है? So this is we will just go to the minor differences between the reversible and irreversible pulpitis. So in reversible pulpitis, the nature of the pain is mild and diffuse, and the irreversible we have sharp, severe, radiating, long duration pain. Then
The second is the brief duration and can be produced cold stimuli that elicits the pain mostly, although hot, sweet, or sour food may also initiate the pain. And in this one, the pain continues even after the stimulus is removed. Tooth response to the electric pulse as low currents increased by stimuli like heat and at times relieved by cold, although the cold may intensify the pain. Reversible pulpitis, if allowed to progress, can lead to irreversible pulpitis when infection extends in cranial apical periodontitis. This is all for today.